Assalamualaikum and a very warm welcome to the platform of one incredible women of Pakistan. Today I'm having Azka Khan with me. She's the principal of Beacon House School System of Ring Road campus, but she is a very renowned educationist. हम जब भी बात करते हैं एजुकेशन की तो वो एक ऐसी हमारी फील्ड है जिसमें हमारी अगली जनरेशन का दारोमदार है. जितना अच्छा हम उनको एजुकेट कर सकेंगे, रादर ये एक ऐसा टूल है जो हम अपनी किसी भी बेटी को बेटे को देते हैं to make him or her successful in life. So go and let's meet Azka Khan and see how she's been handling so many work all together and holding all the strings tightly. Assalamualaikum Azka. Yes, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. You're looking very pretty by the way in this beautiful color. So Azka, let's start about obviously when you were studying yourself. जब हम पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उस वक्त हम टीचर को बड़ा एक एलियन फिगर समझते हैं, समटाइम्स आइडलाइज भी करते हैं, लेकिन we never used to have any idea कि एक दिन हम भी हो सकता है इसी उस पर खड़े हों, इसी पेडेस्टल पे, and we will be doing the same things. I mean delivering knowledge to everybody. So were there any plans when you started into the direction of education, or it all occurred to you at once? Destiny has brought you in this field. मुझे लगता है for me, my gut has always worked. I don't plan. I'm sorry to saying that in public because you're meeting to a person who is very much like that. I never prepare myself for anything. Yeah, so I have never taken paper to anybody. I have never wrote anything before saying it to the people. What happened was like I was a very tomboyish type of a girl, and I played national, and I went to every forum. I was a debater. But looking at you right now, yeah, I'm a 180 degree. So I'm a 180 degree change person. So initially I was a tomboy, and I belonged to a very traditional Pathan family. So I always say that unlike what is happening around us right now, I was raised by a very strong man. And all my success is this is worth taking note of. I mean, raised up by a very strong man. Yeah, because I think we always say that behind a strong man there is a strong female, but I say behind every strong woman there is a man, in a negative way or a positive way. Right. So for me it happened in a positive way. So very well said, both in a negative way or a positive way. There is a reason. It's a ponder point. Yeah. Beautifully said. So I'm taking this as a platform where I want to know that we need to test the water before going into deep dive. If you have a different reason for what you are, I cannot take that reason and become like you. So I believe that people need to see their life in totality, and that's what is happening right now. The chaos is that your nervousness is making me nervous. Your passion can make me passionate for a while, but I don't have a reason. I'll be diffused in a while. Right. So what I did in my life, I always used to take a pause, and I want to know failure is for a reason, success is for a reason, but every time it cannot be a replica of someone's experience. So I have always designed my life according to my experience. So got married in a very young age. This is a very beautiful message you have just conveyed. I mean, that has held my attention very deeply, because normally people, they always take decisions in the light of what has happened to others, what they had faced. उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसे किया था तो ये ऐसा हो जाएगा, हमेशा ऐसा होता है तो अभी ऐसा. You're very right that everyone's life cannot be a replica of what somebody else's. So that's what I have evolved. I'm not saying that this is what I was 10 years back, 5 years back. But the best thing about myself, what I cherish about myself, is not the success I have. I am a better version of myself. What I was yesterday, I am a better person. That keeps me going. So I remember, I don't know from when, but I used to remember that I have to be doing this because I'm not able to do this. So let it be swimming, let it be diving, let it be national, playing basketball with a height which is 5'5" and 5.5. So my passion kept me going. The thing that I have to be a better person. I don't compare myself to other people. That's like, I keep on saying that I'm different from other people. I'm not comparable to you because you're beautiful in your own way. I am comparable to myself. So I have to be a better version what I was yesterday, rather than I am a better version because I met you and then you have an amazing personality. So Allah has made a different chemicals, and Allah has given me birth with 40,000 different neurons than yours. So got married at the age of 22 when I was doing my master's.
So then I got my first baby, the right 9 months. And then on his first birthday, I got another boy. So I'm blessed with 2 boys, and Mashallah. I grew with them. So I decided that I have to be a nurturing mother. Right. So that was my innate need. So I spent my pretty 12 years with them doing nothing. Just swimming with them, going out with them, eating with them, sleeping with them. So, And I think that was your preparatory phase. You were preparing yourself for what was coming your way next, and obviously you were a better version of yourself. so it was at that time specifically for the children, and now you were preparing for the rest of the world around देखो you. आई थिंक कि मैं थोड़ा सा सोसाइटी से इस तरह डिसएग्री करती हूँ कि जो रेज है ना, ये पता नहीं तुम्हारा है कि नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे में है. सो मुझे होता है कि माइंडफुलनेस इज दैट आई नीड टू नो व्हाट बिलोंग्स टू मी. आई कैन स्टैंड विद यू, आई सपोर्ट यू, बट योर रेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी बिकॉज इट्स नॉट ओरिजिनली माइन. तो वो जब बच्चे पैदा किए तो वो जो मदरहुड से रेज था, जो होता है, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, सो मुझे पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो दुनिया में लेके आने वाला होता है. बच्चों का सबसे बेसिक कॉन्फ्लिक्ट अपने पेरेंट्स से होता है, और वही रिलेशनशिप आपका ब्लू प्रिंट की तरह हर जगह चला जाता है. तो अच्छा खामिद, अच्छे बच्चे, भाई, माँ बाप, एक परफेक्ट फैमिली थी. लगा जैसे कुछ है ही नहीं एक्सप्लोर करने को. फिर जब ये बड़े हुए तो मुझे लगा कि अब तो मुझे वो नहीं आता जो इनको पता है. जब तक मुझे वो सब पता था जो इनको पता था, तो आई वॉज एट पार. मतलब मुझे आगे नहीं जाना था इनसे, मुझे वो स्टीरियोटाइप मदर नहीं बनना था. हम वो सब बातें करते थे जो हम देखते थे फुटबॉल में, वो भी रोनाल्डो में. तब तो रोनाल्डो नहीं था, तब हमारा वो था अर्जेंटीना वाला दैट प्लेयर. सो आई रिमेम्बर मैं अपने बच्चों के साथ क्रिकेट देखती थी तो मुझे भी उतना पता था जितना उनको पता था. टेनिस देखते थे तो मुझे भी उतना पता था. फिर एक टाइम आया कि उनको मुझसे ज़्यादा पता होना शुरू हो गया. So then I started off with my education career. Right. So I applied in this school. So then I got a job there. फिर हमने एक अच्छी जर्नी शुरू की. तो मेरे पास कॉमन टॉपिक थे. तो मैंने तुम्हें बताया कि मुझे जहाँ पर होता है कि मैं जहाँ पर हूँ मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ. बिकॉज माँ होने का मतलब ये नहीं है कि आई नो इट ऑल. माँ होने का मतलब ये है कि आई कैन शेयर आइडियाज विद माय किड्स. I thoroughly enjoy when my children they come to me and they tell me आपको पता है ये ऐसे नहीं ऐसे होता है. And literally I cannot express. I mean I enjoy a lot. अच्छा that now they are telling me this. I mean that is beautiful. You have made them greener. आपका काम देखें, मैं ये समझती हूँ कि माँ होने का मतलब ये है कि आप एक shepherd है. It's a shepherd's job. You have to give them a grazing field. You don't have to tell them this. This is the biggest stupidity. Your child is not dumb. Your child has now born they with are a born brain. in an entirely different world. I cannot compare myself, my circumstances with them. I mean it's totally different for them. आपका तो काम सिर्फ ये है कि make their world greener. Give them a grazing field. Give them a water plate. Give them what they want. Don't induce your needs and your desires in them. So but जब उस तरह फिर वहाँ शुरू किया तो it was a very good school. I got recognition. बहुत जल्दी पता लगा कि टीचर्स से ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स हैं. Right. तो फिर then I moved into an admin And I think job. that was very good at your part, and I believe that there were certain factors that were involved in your growth, because sometimes होता है कभी आपको देखते हैं कि अच्छा इसमें spark है, इसमें एक nag है. Sometimes the things turn rather than positive negative हो जाती हैं कि हो इसको तो कहीं और भेज देते हैं, कर देते हैं, या ये हो जाएगा. But you are the lucky person कि आप का काम जो था एक्नॉलेजमेंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड पर चला गया एंड यू गॉट. सो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ब्लेम इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, और ब्लेम लेना आना चाहिए. आई कांट मेक ऑल डिसीजंस राइट. तो हम कहते हैं नेगेटिव फीलिंग इज नेचुरल, बट इट हैज़ टू बी फॉर 5 minutes. उसमें रो, पीटो, दीवार में सर मारो, जो मर्जी करो, एंड देन से आई कांट चेंज इट. सो व्हेन यू कांट चेंज इट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. फिर नज़र आने शुरू होंगे ना हम उसको चेंज करने में, हम उसकी मॉर्निंग में. सो वो जो पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि हल्ला गुल्ला चीख चहाड़ा. पॉजिटिविटी का मतलब है कि जब भी कुछ हो गलत या सही, रिमेंबर इट हैपेंड फॉर अ रीज़न. सो द रीज़न यू विल गेट टू नो लेटर, but there is a reason. So take a pause, relax, see, and then learn a lesson from what you have gone through. So that's what I was doing. I was mindful. I would say the only thing that worked for me is mindfulness, because अपनी body में anxious होने का मतलब मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था. Right. और anxiety and anger मेरे लिए negative feelings नहीं है.
वो मेरे लिए मेरी बॉडी का मैसेज है। तो जो सबसे बड़ी तबाही हम कर रहे हैं ना, हम अपने Aska, बच्चे ऐसा तो नहीं that you being having an educational background with you of understanding feelings and coping with them. I mean, sometimes anxiety is something which bothers me a lot, to be very honest. And I normally, whenever I'm not feeling good and I'm very anxious about something, and something is bothering me like anything, so I always start saying my namaz or my nawafil or something. That Yeah. is my coping mechanism. But in your case, I've seen that you have come out of it. You have conditioned yourself in a way that now you are calm and peaceful, and you know that how you're going to manage your this particular horrific situation. I must say. देखो आइडिया ये है कि हमें बचपन में हम सबको, देखो हमारा एक ही बैकग्राउंड है, और एशिया की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आप जिधर मर्जी हो, आपका जो इनेट सेल्फ है ना, वो बहुत सिमिलर है, बिकॉज हमें पैदा करने और बड़ा करने वाले लोगों का एक ही फियर, Norms, traditions, ट्रेडिशन और फियर प्लीज कॉमन थे। तो वो जो सबसे खूबसूरत बात ये है ना कि तुम्हें भी कहा कि अंधेरे में बाहर नहीं जाते, मुझे भी कहा अंधेरे में बाहर नहीं जाते, वो कमरा बंद है वहाँ ना जाओ। That reminded me of something I would love to quote here. Once I told my daughter, बेटा जहाँ भी जाना है ना, मगरिब से पहले बस तुमने घर आ जाना। तो उसने मुझे आगे से पूछा, मामा वो कौन सी चीज़ है जो मगरिब से पहले नहीं होगी और वो कौन सी चीज़ है जो मगरिब के बाद होगी? उस वक्त तो मैंने उसको कहा, बेटा नॉर्म्स आर नॉर्म्स, ही हमारी ट्रेडिशन एंड यू हैव टू फॉलो दिस। लेकिन लिटरली अस्का, व्हेन आई वाज सिटिंग अलोन एंड आई मीन वेंट बैक, आई वाज वंडरिंग कि उसने कितनी सही बात की, वो कौन सी चीज़ है जो उस वक्त होगी और उस वक्त नहीं होगी, एंड देन आई केम अप विद द लॉजिक व्हिच आई। तो जो मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारे यहाँ से उस पे जाने के इसको ख़त्म करते हैं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे से ऐसा एक सिमिलर मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ। सो खैर आई रिमेंबर मैं हमेशा से एक रिबेलियस चाइल्ड थी, और मैं आज भी हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया है मैं जिस तरह हूँ, बिकॉज मेरे लिए मोहब्बत ये है कि एक्सेप्ट मी द वे आई एम। इफ़ यू वांट टू चेंज, सो आई एम गोइंग टू बी दैट image which you have loved. I don't want to be an image, I am a person. So take me as a bit with a pinch of salt. And there's a hell of difference between an image and a person. Yeah, so मुझे लगता है कि मोहब्बत की डेफिनेशन हमें नहीं आती। मोहब्बत उन खामियों के साथ होती है जो हमारे अंदर होती हैं, और जब हम कहते हैं कि यूँ कर लो, हेयर स्टाइल ये बना लो, रंग तो मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट माई वाइफ टू वेयर दिस, आई वॉन्ट माई डॉटर और माई सिस्टर टू बी दिस वे, सो फिर तो आप कंडीशन कर रहे हैं ना। तो मोहब्बत के साथ एक चीज़ जो नहीं चलती वो कंडीशनिंग है। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि आई एम लवेबल एंड यू हैव टू लव मी द वे आई एम। सो दैट्स व्हाट माई इमेज इज नाउ। सो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मैं बॉदर कर सकती हूँ, लेकिन अंदर से मैं अच्छी हूँ। सो गो डीपर एंड फाइंड आउट आई हैव अ बेटर पर्सन। सो मैं हमेशा कहती हूँ, अंधेरे से डराया, बाहर जाने से डराया, आदमी से डराया, अपनी फीमेल बॉडी से डराया। तो वो जो क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, और आज भी है, और आज भी मुझे तुम कुछ करोगी तो मैं कहूँगी ये क्या कर रही हो, बहुत सवाल पूछती हूँ। तो वो जो अंदर का बच्चा है ना, आज भी बहुत जिंदा, इतने सवाल पूछती हूँ कि मैं कहती हूँ ओह माय गॉड, पीपल इज गोइंग टू they are going to hate me, but they don't. So sometimes when you are asking questions, I mean basically you're making others to learn. Yeah, I mean because, it's a learning process. जब आपका process mind learning, it's a stimulation for us. Stimulation, and then sometimes you give me stimulation, sometimes I'm going to give you stimulation. So खैर अंधेरे तो मुझे लगा कि मैं जब छोटी सी थी, और मैं आज भी अक्सर लोगों को ये वाकया सुनाती हूँ, जैसे ये जाली है, खिड़कियों में जालियाँ लगी होती हैं, तो I used to stand behind it and I used to see तेरा क्या कह रहा है। फिर वो मॉन्स्टर्स की शक्लें बनती थी आसमान में, और लगता था कि वो अच्छा ये तो फिर आई रिमेंबर रात को कई दफ़ा दरवाज़ा खोल के, खिड़की खोल के बाहर चली जाती थी, एंड आई से किधर है मॉन्स्टर, आओ। अच्छा, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो तब सीखा कि फियर की आँख में देखना पड़ता है। फियर तब तक फियर है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सो लोग डराते हैं, फिर दिमाग डराता है। तो व्हेन आई गो इनटू साइकोलॉजी, तो वो तो एक बहुत बड़ा समंदर है जिसको छोटी सी बात में नहीं। ब्रेन आपका बहुत बड़ा दोस्त नहीं है। ब्रेन का मकसद और ब्रेन के होने का वजूद था सर्वाइवर। सो जब आप सर्वाइवर के हाथ में खिलौना बन जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी क्योटिक होगी। सो कहते हैं ब्रेन इज़ एन अमेजिंग स्लेव बट अ वर्स मास्टर। सो ये जो ब्रेन है, ये आपको सर्वाइविंग मोड में आपको सेफ रखता है। ग्रोथ के लिए सेफ ही तो नहीं होना, ग्रोथ के लिए आपको अनप्रेडिक्टेबल होना है। सो ब्रेन नहीं होने देगा। योर ब्रेन विल नेवर टेल यू टू डाई फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। वो कहेगा नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, ये मत करो कुछ हो जाएगा। तो जब हम ब्रेन की सुनते हैं तो फिर हम अपनी नहीं सुनते। सो इसलिए अब आज भी यहाँ बैठे हुए भी मुझे ये पता है कि अगले 2 महीनों में मैंने अपने आप को इतना बड़ा चैलेंज देना है, क्योंकि मैं ब्रेन की नहीं सुनती।
So मैं अक्सर कहती हूँ कि So your life must be very happening all the time. it is. I have got every kind of life which I enjoy. Every aspect of life is very different. तो बस कर फिर एजुकेशनिस्ट बनी, फिर काम शुरू किया, फिर एक और ब्रांच में गई. They're all amazing schools. I've learned a lot. Eventually यहाँ आई और अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ आके ये लगता है जब साइकोथेरेपिस्ट होती हूँ एक कमरे में अपने क्लाइंट के साथ बैठी होती हूँ, जब स्कूल में माँ बाप का वर्जन सुनती हूँ और बच्चों का सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम उस इकबाल के शेर में जी रहे हैं कि जहाँ जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी. सो सब कुछ है पर माइंडफुलनेस नहीं है. हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, कुछ भी कोई बना भी देते बेस्ट हैं, प्रोफेशन देते कुछ हैं. भी दे देते हैं, लेकिन उसको लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते. सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज. आई एम वर्किंग ऑन एन इमोशनल स्पा. मुझे लगता है कि साइकेट्रिस्ट भी एक टैबू है और वो भी एक डिपेंडेंसी. Very right. You are absolutely right. Because whenever somebody in my family they come up to me and they say हमने psychiatrist को visit करना है या therapist के पास जाना है, तो ऐसा होता नहीं बिल्कुल नहीं जाना, वो तो मैं ये कर रहा हूँ, तुम मजीद ऐसे हो जाओगे, you will lose yourself. Honestly, Because safe place नहीं है ना हमारी हर जगह, हमारा हर बंदा. But while we were talking, I was so much lost in relating myself to whatever. I will rather say it was you were giving me tips of life which I was absorbing, and I was thinking she's so right. हाँ ये तो ऐसे ही है. I mean it was lovely talking to you, Thank Azka, you. and knowing you and knowing that people like you are working so much to. I mean to give a better version of life to everybody. Thank you. बस I would just end up here. मुझे लगता है कि अपने बच्चों को सब कुछ सिखाओ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाओ, पर ज़िंदगी किन स्टेप्स पे गुजारनी है ये हमारा काम है. चाहे हम एजुकेशनिस्ट हो, चाहे हम वो हो, उनको कोप करने का तरीका आना है. बिकॉज उनकी जांग, उनकी स्ट्रगल्स तो जान ही नहीं सकते, अपनी कल की नहीं पता तो उसको क्या पता. तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको टेम्पलेट्स दे दें, जब ये हो तो यूँ करना, जब ये हो तो यूँ हो. जब असल में होगा तो उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है. तो वो जो मैं तुम्हें बात करी ना कि पॉज लेना आना चाहिए, माइंडफुलनेस, और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. मैं बिल्कुल एक नॉर्मल मामूली सा इंसान हूँ. ये एक स्किल है, इसको सीखना और प्रैक्टिस करना इज़ एन आर्ट. तो life in itself is beautiful, but just we have to know the art of living a life. So that's what I want people to know, and that's what I am going forward every to. word you are saying while we were talking, because since you're sitting in front of me and I've been noticing a lot of things, a very positive energy and a sign of contentment is reflecting from your face. I mean, thank you so much for joining us today and sharing something beautiful which is worthless. Thank you so much once again. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you for bringing me here, and I'm loving this place and the energy. I think ये तो environment create करती है, तो यहाँ आकर एक अजीब मज़ेदार सी feeling है. This is a beautiful place, and I'm sure that a lot of lovely people are working behind this, or keep working, because I think there is a lot to be done in the society. We all have to work. Thank you so much. Thank you.